चलें ओके बेटा। सो लास्ट टाइम हमने वी डिड सम बॉन्डिंग से रिलेटेड चीजें करी थी हमने, और कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉन्ड पेयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन पेयर। ठीक है ना, ये 100% क्लियर होना चाहिए। सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर यू हैव अराउंड द सेंट्रल एटम, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी small concept, which is basically the concept of a polar and non-polar covalent bond. Polar and before we do polar and non-polar covalent bond, let's do the concept of electronegativity first. देखो, when there is a covalent bond between two atoms like A and B, ठीक है, इनके दरमियान एक covalent bond है, one electron from A, the other electron from B. अच्छा, इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ए भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, सॉरी, एंड बी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना? ऐसे ही ना, बाय द न्यूक्लियर चार्ज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सो द पावर बाय विच both of these element attracting these bonded pair of electrons toward itself, ये कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का आपस में बॉन्डेड हो गया, ठीक है ना, नाउ दिस इज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ ऑफ दीज एटम attracting these bond pair of electron towards itself, जब भी तो उनके दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। जिस फोर्स के साथ और जिस पावर के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो पावर कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो कैन आई डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी as the power of an atom to attract the bonded pair of electron, the power of an atom to attract the bonded pair of electron, जिसको हम shared pair of electron भी कह सकते हैं। तो पहले इसकी definition लिख लेते हैं, and then we understand the concept. The power, bonded pair, हाँ, the power of an atom to attract the power of an atom to attract the bonded pair, or which is also called shared pair of electron. ठीक है बेटा, bonded pair of electron towards itself. ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बताएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पावर जिससे वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? बताइए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट? डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस पे, एंड कैन आई से दैट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर चार्ज एज वेल, है ना? सो कैन आई से दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En हम कह सकते हैं इसको, यस यू कैन कॉल इट एन En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to nuclear charge. Agreed? And the same electronegativity is inversely proportional to the nuclear distance. Nuclear, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा पावर से the atom will attract a bonded pair of electron towards itself. ठीक है? So electronegativity is basically the directly proportional to the nuclear charge and inversely proportional to the nuclear distance. ठीक है? Now the next, if I say from left to right in a periodic table, left to right, हाँ जनाब, nuclear charge increases, nuclear distance same. So what should be the trend of electronegativity?
इंक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है, देयर इज अ इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टिल बॉटम, ठीक है, as we can see the nuclear distance increases, agreed, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छा, क्या और एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है कि डायगोनली फ्रॉम इन अ periodic table, if you go across this in a diagonal, it remains same, ठीक है, क्लियर। सो लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप, क्या आपको कुछ सुनी सुनी बात लग रही है? लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप ये वाली, यस, सेम एज ionization energy, exactly the trend of electronegativity, because क्यों सेम है? Because the factors on which the ionization energy depends, the same factor पे हमारे पास electronegativity depend करती है, ठीक है, clear? So if I ask you, can you identify the group in a periodic table that should have or that have the highest electronegativity value? हाँ भाई, कौन सा ग्रुप पिक कर रहे हो? Group 8, but we are talking about the power by which it attracts a bonded pair of electron. And group 8 element, they do not make any covalent bond. So it must be group. So yes, halogens have the highest electronegativity value. Top to one. Cancel out हो जाता है. Nuclear distance and shielding effect cancel out the increase in nuclear charge. है ना, तो overall decrease ही आएगा. हाँ, वही same explanation है, the explanation of ionization, exactly the same, ठीक है. Halogens have the highest electronegativity value among all the groups in a periodic table. And within halogen, which element have the highest electronegativity value? Down the group decreases. So it basically fluorine have the highest electronegativity value among all the elements in a periodic table. ठीक है, fluorine is the element that have the highest electronegativity value among all the elements in a periodic table. ठीक है जी, so sum up करते हैं. Basically, electronegativity is the power of an atom to attract a bonded pair of electron towards itself. Okay, electronegativity value is directly proportional to the nuclear charge, inversely proportional to the nuclear distance. Left to right increase होती है, down the group decrease होती है, ठीक है. सही, तो फ्लोरीन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. आगे चलते हैं. अब एक जरा कंडीशन देखिए. You have a covalent bond between two elements A and B, and this is the bonded pair of electron. The condition is if the electronegativity of A is greater than B, तो क्या होगा? A will attract this bonded pair of electron towards itself more. So होगा क्या कि ये bonded pair of electron will move slightly or more towards B. ओके, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे चार्ज क्या आता है? और जिससे दूर जाते हैं उस पे चार्ज आता है पॉजिटिव. As this is not the complete movement of electron from B to an A, है ना, this is just a partial movement of electron. The electron moves slightly towards A, so this is not the complete transfer of an electron. That's why we call it partial positive and partial negative. These type of covalent bonds are called polar covalent bond. इनको हम क्या कहते हैं? Polar covalent bonds. ठीक है.
अब मैं डिफाइन करूं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को. Polar covalent bond is formed by the unequal sharing of an electron between two atoms in which there is a significant difference of electronegativity present. Unequal sharing का मतलब क्या है? The more electronegative element will attract the bonded pair of electron toward itself more, making itself partial negative, और दूसरे पे चार्ज क्या आ जाएगा? Partial positive. ठीक है? So this is basically the idea of electronegativity. Clear? So हम यहां लिख रहे हैं polar covalent bond. सही है? And if I ask you to define polar covalent bonds, तो हम क्या define करेंगे? A covalent bond formed by the unequal sharing of electrons between two atoms in which there is a significant difference of electronegativity present. ठीक है बेटा? So unequal sharing से क्या बनेगा? Polar covalent bond. And exactly opposite होगा non-polar covalent bond. वो क्या होगा? Equal sharing of electron. है ना? Now, before I move forward, let me give you the example of a polar covalent bond. ठीक है? Now the example. देखिए जनाब, all the bonds of carbon with either bonds of hydrogen with either nitrogen, oxygen, sulfur and halogen. ठीक है? All these bonds are the polar covalent. This is partial positive, this is partial negative, positive, negative, positive, and this is partial negative, partial positive, partial negative. In a similar way, all the bonds of carbon with either nitrogen, oxygen, sulfur, and halogen. These are basically called partial negative, 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 and this is partial positive. हाँ, कार्बन की इलेक्ट्रॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम. प्रिडिक्ट कैसे करेंगे बेटा? द वन विच इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द पीरियोडिक टेबल, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. ठीक है? नाउ non-polar covalent bond. Can I say that it is a covalent bond formed by the equal sharing of an electron, है ना? Between two atoms in which there is a little or no difference of electronegativity present. ठीक है? So can I say that the covalent bond formed by the equal sharing of electrons in which there is a little or
No difference of electronegativity present. ठीक है बेटा, this is called basically a non-polar covalent bond, equal sharing of electrons. सही है? Now examples: all diatomic molecule, hydrogen, hydrogen, chlorine, chlorine, bromine and bromine, है ना? कोई तो all these diatomic molecules are typical non-polar. एक example याद रखिएगा. The carbon and hydrogen bond is a typical non-polar covalent bond. That's why all hydrocarbons are non-polar. ठीक है? That's why all hydrocarbons are non-polar. ठीक है? आगे चलते हैं. So you just have to pick, is there any polar covalent bond present in a molecule or not? That's going to be the question. ठीक है? So आपको बहुत आसान सी examples हैं आपके पास. If you remember all these polar covalent bond, you can easily predict. And the concept is that polar covalent bond is formed by the unequal sharing of electron due to the difference of electronegativity. If there's a large difference of electronegativity present between two atoms, then the bond form is basically a आयनिक बॉन्ड. अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ना ग्रुप 1 का ग्रुप 7 के साथ, ठीक है ना, वन इज ऑन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द अदर वन इज द राइट मोस्ट, ठीक है, तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा. द पावर ऑफ ग्रुप 7 इज सो मच ग्रेटर देन ग्रुप 1 कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो छीन के ले जाएगा. Na become Na positive and Cl become Cl negative. So group 1 with group 7, group 2 with group 7, ionic. As the distance between the element in a periodic table decreases, वो ionic से किसकी तरफ आ जाते हैं? Polar covalent bond. And when it decreases more, it become a non-polar covalent. So very little difference of electronegativity. It is a typical non-polar covalent bond. थोड़ा सा ज्यादा difference होगा polar और बहुत difference होगा, so it's a ionic bond. Now the data of these electronegativity values are given. I think the maximum value is 7, which is for fluorine. बाकी सबकी इससे कम कम हो. जैसे carbon is 2.1 and hydrogen is 2. Hydrogen is 2.1, carbon is 2.3. Very little difference of electronegativity. तो इनका bond क्या बनेगा? It's always a non-polar covalent bond. मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ. There is a prediction about कि कौन सा bond polar होगा और कौन सा bond non-polar होगा. So can you see the bonding here? Okay. ठीक है बेटा. So this is if the difference in the electronegativity is 0 till 0.4. That poly ये कहलाती है Pauling electronegativity value. ठीक है, Pauling electronegativity value ये given होगी आपको. ठीक है, आपको दो एलिमेंट का डिफरेंस निकालना है. If the difference is between 0 till 0.4, it's a non-polar covalent bond. This is called little or no difference. ठीक है, but the difference is 0.5 से 1.2 तक होगा तो polar covalent bond, or if it's greater than 1.3 then it is a ionic bond. Please make a note of it. ये आपके पास होना चाहिए. ठीक है. Zero to 0.4, 0.5 to 1.2, and 1.3 से greater पे it will be a ionic bond. So you just have to subtract it and you can predict which type of bonding is taking place, है ना? So if I ask you sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, period 3.
है ना, लेफ्ट टू राइट, electronegativity value increases, ionization energy value increases. What's the difference between the increase in the ionization and electronegativity? एक difference आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों बढ़ती है, लेकिन अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ग्राफ में और आयनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ में एक डिफरेंस आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एक्सेप्शनल केसेस, एक्सीलेंट. ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है बट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस. ठीक है. अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन इन अ पास्ट पेपर इन व्हिच दे आस्क्ड दिस. उन्होंने एक एक्सिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉ करी, दूसरे एक्सिस पे उन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी ड्रॉ करी, और आपको दोनों एक्सिस के हिसाब से ग्राफ को चेक करना था कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट. तो बात याद रखिएगा कि एक्सेप्शनल केसेस सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी में होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं होता. ठीक है. सो कीपिंग दिस वन इन माइंड, लेट्स मूव टुवर्ड्स अ वेरी स्मॉल, एक और टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवानी है एंड बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग एंड अदर स्टफ, वो है अबाउट द सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड. ठीक है, सिर्फ टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. ओके, एक की कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड इज बेसिकली द फर्स्ट बॉन्ड formed between two atoms. दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा सिग्मा. पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता ही मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड है. मल्टीपल का मतलब आइदर ट्रिपल और डबल कोवलेंट बॉन्ड, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. एंड दिस इज बेसिकली द बॉन्ड्स formed after sigma bond between two atoms. ठीक है. अब ये बात थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, सीख लेते हैं. नाउ दिस इज CH4. कैन यू सी एनी डबल कोवलेंट बॉन्ड, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है इसमें कोई? बताओ भाई. CH4 में नहीं, ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सो दे ऑल आर द सिग्मा बॉन्ड्स. ठीक है ना, क्योंकि दीज आर द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एट. इन अ सिमिलर वे, if I give an example of C, double covalent bond C, and then you have hydrogen, then you have hydrogen, hydrogen, and hydrogen. So carbon and hydrogen, this bond, this is basically the sigma bond. ये सारे सिग्मा हैं. ठीक है. बट अब बात करते हैं यहां पर, this is the region where you have a multiple covalent bond present. ऐसे ही ना. सो जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई. The first bond form is sigma, the other one is a pi bond. Can I say that this particular carbon जिसको मैंने मार्क किया है, making 3 sigma and 1 pi bond. This carbon is making 3 sigma and 1 pi bond. ठीक है ना? Agreed? आप जल्दी से मुझे एक बात आंसर करो. If this is the case, carbon, triple covalent bond carbon, and then hydrogen, and then hydrogen. हाँ, नहीं, ईच कार्बन, मैंने सिर्फ इस कार्बन की बात करूंगा, इसको मार्क किया. ठीक है. सो इन दिस वन, this all these carbon hydrogen single covalent bonds are sigma bond. Carbon carbon first bond is sigma, and the rest 2 bonds are the pi bonds. So each carbon atom here is making 2 sigma and 2 pi bond. Each carbon is making 2 sigma and 2. This concept is not only in carbon. If you have nitrogen,
triple covalent bond nitrogen. So the first one is sigma, and the rest two are the pi. Again, the first one is sigma, and the rest two are the pi bonds. सही बस समझ लो मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हमने पाई बॉन्ड का नाम दे दिया. Why they why be given the different name? The reason is कि इनकी थोड़ी सी ना बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इज स्लाइटली डिफरेंट, जो आगे जाके हमारा टॉपिक है और हम पढ़ेंगे. अब अगर इफ आई गिव यू अ मॉलिक्यूल and if I ask you how many sigma and pi bonds you have, so you should be able to count कि कितने sigma और कितने pi bond यहाँ पर मौजूद है. As an example, if I ask you C H, मैं डिस्प्लेड फॉर्म में दे रहा हूं लेकिन एग्जाम में ज्यादा डिस्प्लेड फॉर्म में नहीं गिवन होता, ठीक है बेटा. कैन यू गिव मी द नंबर हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दिस मॉलिक्यूल हैव? हाँ भाई, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं? सो पाई बॉन्ड तो मुझे कितने नजर आ रहे हैं? आई कैन सी 2 पाई बॉन्ड्स, है ना. Carbon, oxygen, carbon, carbon. There are 2 pi bonds. And how many sigma bond? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sigma bond. ठीक है बेटा. So I hope कि you can count these sigma and pi bond easily आराम से. और ये इसी से related question हमारे पास पूछे जाते हैं ज्यादातर. So नहीं टॉपिकल बात है, वो टॉपिकली. ठीक है, बताइए जनाब, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड यू कैन सी हियर? पाई बॉन्ड 3. सो इट मींस दैट द ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है व्हिच इज सी, है ना. You can see 3 pi bonds, so only one option get eliminated, which is C. How many sigma bonds you have? 13. Yes, but you are forgetting that this is CH3 beta. So there are 3 bonds here. One with this hydrogen, and this hydrogen. And this is CH2. CH2. मैं सबको डिस्प्लेड लिख रहा हूं ताकि आपके लिए काउंट करना become easier. I think it's 25. है ना, ऑल टुगेदर 25. ठीक है. सो कीप इन माइंड कि आपको सिग्मा और पाई बॉन्डिंग में इस बात का ख्याल रखना है कि मेक श्योर दैट यू काउंट ऑल दीज कार्बन्स जो यहाँ पर. दैट्स हाउ दे आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बेटा आसान सा क्वेश्चन है, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं. और आई थिंक इट इज वन मोर क्वेश्चन इफ आई रिमेंबर. ओके, दिस वन. हाउ मेनी sigma bonds are present in this molecule? Question number 101. How many sigma bonds are present in this molecule? Yes, 2 here, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. That's the right answer, 18. ठीक है. So this is all. आज दो चीजें कर रही हैं. Polar non-polar covalent bond, the concept of electronegativity, which move to, and then the sigma and a pi. ठीक है. So we just keeping it till here today, and then next class में करेंगे.